Okay, so let's discuss the question answers, NCERT question answers of chapter respiration in organisms. Coming to the first question now. Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? So why after finishing the race an athlete he breathe more fast? ठीक है, क्यों वो ज़्यादा fast breathe करता है? Yes, Ruhani? Ma'am, the athlete breathes faster and deeper than usual after the race because the demand of energy is more and supply of oxygen is less. Very good. So here the demand of energy, that means when the person is running, his body needs lot of energy. Okay, so the demand of energy, it basically increases, but the body is not capable of producing too much energy due to insufficient oxygen. Okay, so that's why he has to breathe deeper and faster in order to get the proper supply of oxygen. Okay, so this is the reason that demand of energy increases. The demand of energy is more, but supply of oxygen is less. Okay, so in order to compensate that oxygen, his body it breathes more fast and more deep. ठीक है, तो उसका breathing rate जो है that basically increases. So next, list the similarities and differences between aerobic and anaerobic respiration. जी Adgun, what is the first similarity? आपने similarities Yes, ma'am. and differences भी बताने हैं. Okay, so Okay, similarities ma'am. बताइए पहले बेटा. Ma'am, in both kinds, food is broken down to release energy. Very good. In both the times, the food is being broken down and both the respiration, they give us energy. Very good. So next, Shubh, any other similarity, beta? Ma'am, they both occur inside the cells. They both occur inside the cell. This is the second similarity. Okay. So they both represent the cellular respiration. Yes. Ma'am, I have answered one different. Ma'am, can I speak? बेटा पहले similarities के points discuss कर लें और Okay, ma'am. चलिए. हाँ जी हरमीत, any other point for similarity? हरमीत. वो दूसरे सुना दो उसमें. हाँ जी. Yes, Gaurish, any other point for similarity? Ma'am, these 2 points are like in my mind. Okay. I have points for differences. Okay. 5 to 6. Ma'am, I have a point for similarity. I have, who is speaking? Ma'am, Adgun. Yes, Adgun, बोलिए बेटा. Ma'am, both supply byproducts. They both gives byproduct. Very good. ठीक है. So this is the third point that they both give byproducts. तो दोनों जो हैं वो cells में होती हैं, दोनों energy देती हैं हमें, ठीक है, food breakdown करती हैं. Okay, and you can also include that they both need, or here the food is being glucose, and in both the case the byproducts they are given. Yes, Savya. Ma'am, in similarity, can we write carbon dioxide, water, and energy? But that is not actually produced in both. कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में प्रोड्यूस होती है, दैट इज द मेन प्रोडक्ट. ठीक है, तो आप जब बाय प्रोडक्ट लिख रहे हो कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में प्रोड्यूस होती है, दिस पॉइंट यू कैन इलैबोरेट. ओके, आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि दोनों बाय प्रोडक्ट्स देते हैं, बाय प्रोडक्ट्स आर गिवन, दे बोथ रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, दोनों में फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट यू कैन इन्वॉल्व इज दे बोथ अकर इन सेल्स. ठीक है, तो ये आप 4 पॉइंट्स जो हैं वो सिमिलैरिटीज के मेंशन कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द डिफरेंस पॉइंट. हाँ जी शुभ बोलिए. Yes, ma'am. Ma'am, in aerobic respiration, it takes place in the presence of oxygen, and in other side, it takes place in the absence of oxygen. Very good. So aerobic respiration, it takes place in the presence of oxygen, and anaerobic respiration, Ma'am, in the absence of oxygen. in the absence of oxygen.
ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और किसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है? इन विच ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस एनर्जी रिलीज इज मोर? Anaerobic respiration. Anaerobic respiration. Okay, more energy is there or more energy is released. यहाँ Ma'am, पर in the case of aerobic respiration, there is complete breakdown of food, and in the case of anaerobic, there is incomplete breakdown of food. very good. So here the complete breakdown of food is there. Okay, and what about here? Here the incomplete breakdown of food is there. In Okay, दोनों में aerobic बाय respiration- प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं. They both are having different different बाय प्रोडक्ट्स. ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है? You get carbon dioxide, water and energy. And what happens in this case? Alcohol, CO2, and energy. Alcohol, carbon dioxide and energy. Any other point? In aerobic respiration, a large amount of energy is released. In That we have mentioned. anaerobic, More energy release. वो हमने mention कर लिया. Ma'am, in aerobic respiration, it occurs in most plants and animals. In Very good. anaerobic respiration, it occurs in yeast and bacteria. So here you can include the examples. Plants and animals, they respire aerobically. ठीक है, और anaerobic में आप examples दे सकते हो yeast and bacteria. Any other point of difference, बेटा? Any other point of difference? Okay, sufficient now. Yes, ma'am. क्या तो enough similarities Yes, ma'am. and differences. 4 similarities बता दी हैं आपको मैंने, 4 differences के points बता दिए. So you should be including them. Okay, why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? So what is the mechanism of sneezing? Let me see others also. Hanji, Jasmeet. Jasmeet. Yes, Jasmeet. Why we often sneeze, beta? जी यादगुन बोलिए बेटा. Yes, ma'am. When we inhale dust-laden air, the dust irritates the nose as a reflexive action. Dust is thrown out through sneezing. Okay, so what happens is, और कौन elaborate करेगा? Yes, Shubh, elaborate it. Why we sneeze? Ma'am, I was having same answer. You are having same answer. What about here? Nasal cavity, mucus. Nothing is being discussed about that. Hanji Gaurish बोलिए. Yes, ma'am. The air contains a lot of smoke, dust particles, and when that dust particles enters the nasal cavity and comes out. Just a minute. Just a minute. So when it enters the nasal cavity, hair and mucus are there. ठीक है? So if they pass the hair and the mucous membrane, they cause irritation in the nasal passage. Okay, so they continuously, when they are going into your nasal cavity, so when they enter the nasal cavity, they cause irritation in the lining of the nasal cavity. Okay, so due to this irritation in your nasal passage, okay, you sneeze. Why you sneeze? To remove out these foreign particles. Okay, foreign dust particle, pollen particles that are entering your nose. Okay, hair and mucous membrane are there in order to prevent them from entering in the body. But when they pass from these hairs and mucus, okay, they irritate the nasal cavity, the lining of the nasal cavity, due to which you sneeze. Okay. Ma'am, can I speak my answer now? So, अब next answer दे देना बेटा. Okay. चलिए, I have explained it now. Yes, mother. Yes, this is now very.
question. No, you have to give the answer of next question. Just listen the question firstly. पहले क्वेश्चन सुनिए अच्छे से, फिर आपने आंसर देना. ओके, चलिए. The question is कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं A, B and C. You have to fill them 3/4 with water. Okay. In the first test tube there is snail. Snail देखा हुआ है आप सबने, ठीक है? So in the second test tube, keep a snail in the test tube A. In the second test tube there is one water plant. Okay. तो B test tube में एक water plant है. और सी टेस्ट ट्यूब में आपने वाटर प्लांट भी रखा है और स्नेल भी रखा है. एंड दे आर आस्किंग यू दैट इन विच ऑफ द टेस्ट ट्यूब देयर विल बी हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ जी माधव, नाउ यू कैन गिव योर आंसर बेटा. माधव, Yes, ma'am. व्हाट इज योर आंसर? Ma'am, I think so. C. Why you think C? And because it contains both snail and plant. Then how that is going to affect the concentration of carbon dioxide, beta? Devang बोलिए बेटा. Yes, Devang. Ma'am, I also think of C because the water plant and the snail will release the carbon dioxide, and the water plant will take the carbon dioxide from the humans or the other organisms. So it will be more carbon dioxide in that test tube. Beta, if it is taking, snail is consuming, if the snail is exhaling the carbon dioxide and water plant is basically using that carbon dioxide, ठीक है? तो अगर वो आ रही है तो that is also going to be used. तो C तो वैसे भी आंसर नहीं है. Yes, Aksham? Ma'am, A. A will have high concentration of CO2 because test tube A will have snail which expels out O2. Very good. तो what happens in this question? बेटा देखिए, C वाला तो हमने वैसे ही नेग्लेक्ट कर दिया है. क्यों? अगर स्नेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहा है तो जो वाटर प्लांट है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू डू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, सो दैट योर आंसर कांट बी सी. बी पे चलते हैं. बी वाटर प्लांट है, ठीक है? तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर रहा है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी यूज भी तो कर लेगा उसको. ओके, अगर वाटर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहा है, ओके, इफ इट इज गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड in the respiration process, so that will be used by the plant itself for the photosynthesis process. So again B is not the answer. So your correct answer is C. यहाँ पर सिर्फ स्नेल है जिसने रेस्पायर करना है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड देनी है. That's it. ठीक है? तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने वाला कोई नहीं है. So that's why the A test tube will be having the higher concentration of carbon dioxide. Okay? Clear? हाँ जी, clear to everyone? ठीक है बेटा. Next is you have to choose the correct answer. In cockroaches, air enter the body through. हाँ जी, what is your answer? Madhav? How air enters the cockroaches? Ma'am, third spiracles. Through spiracles. ठीक है? So spiracles is the correct answer. Coming to the next one. During heavy exercise, we get cramps in the legs due to accumulation of. क्या accumulate हो जाता है? Yes, lactic acid. Very good. You can give your answer in the chat box for this, beta. Normal range of breathing rate per minute in an average person is, which is at rest. 15 to 18. Very good. 15 to 18. ठीक है? Times in a minute. So you will be having a test today also, right? Of this chapter. During exhalation, the ribs कैसे move करती हैं ribs? Move Downwards. Move downwards. Very good. Downwards. They move down. Next are the match the columns. You have to match the column 1 with the column 2.
Okay, so you can give your answers in the chat box again. Yeast. Yeast के लिए आप कौन सा suitable word देखते हो? For the yeast, alcohol. Very good. For the diaphragm, Chest cavity. Chest cavity. yes. For the diaphragm, that is the chest cavity. The third one, skin, Ma'am, earthworm. earthworm, leaves. What for the leaves? Stomata. Tomato. Leaves, stomata. Next one, fish. Gills. Gills. Very good. Frog, Trachea. Trachea. water and land. Water and land है कि lungs and skin है? Lungs and skin है. Okay, so these are your match the columns. Okay. Coming to the next part now, you have to give the answers of true, false. During heavy exercise, the breathing rate of a person slows down. Is it true or false? क्या slow हो Ma'am, जाता है? false. So this is false. No. Breathing rate it increases. कितना increase कर जाता है? 15 to 18 से कितना increase कर जाता है बेटा? 25. Okay, that is more than 25 times in a minute. Plants carry out photosynthesis only during the day and respiration only at night. Is it possible कि वो डे टाइम में सिर्फ photosynthesis करते हैं और रात के टाइम पे सिर्फ respiration करते हैं? This is also false. Frogs breathe through their skin as well as through their lungs. This is true. Very good. Okay, so frogs, they are having both lungs and they also respire through their moist skin. Fishes have lungs for respiration. False. They respire through gills. So during inhalation process, the size of chest cavity increases. Is this true or false? This is true. Why the size of chest cavity increases? Because the diaphragm it contracts, okay, and ribs they move outwards. So due to this, the size of the chest cavity it increases. Now coming to the 9th question, okay? 9th question is there. The mountaineers carry oxygen with them because what can be the reason? Jishub, what can be the reason why the mountaineers they carry oxygen cylinder with them? Ma'am, B option, the amount of air available to a person is less than that available on the ground. So this happens because we know as we move higher and higher, okay, तो जैसे हम higher altitudes पे जाते हैं, there the amount of oxygen in the air it decreases. ठीक है? तो ऑक्सीजन का जो कंटेंट है एयर में वो कम हो जाता है जैसे आप ऊपर जाते हो. Okay, so that's why the mountaineers they carry oxygen cylinders with them, right? Yes, the air becomes thinner. So with this, your chapter is complete. If you want to ask any doubt, because today is your test also, so we can discuss. Any doubt, you can lower your hands now. All of you, please lower your hands. Okay, the questions you have to do in your fair notebook. Please listen. 1, 2, 3, 4. That's it. First, second, third, fourth question you have to do in your notebooks. Okay? 1, 2, 3, and 4. Clear? So all of you please lower your hand beta now, ताकि मैं देख सकूं अगर किसी को कोई doubt है, so we can discuss that. So only students that are having doubt can raise their hands.
रियाज गुन, आदित्य एंड शुभ, बोलिए। मैम स्पीकर एक बार थर्ड को रिपीट कर दो। शुभ, यू कैन स्पीक बेटा। Ma'am, Aditya is saying, please repeat third question. Ma'am, he's saying, please repeat third question. यू आर नॉट ऑडिबल बेटा, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। क्विकली बेटा, गौरीश बताइए, एनी डाउट? यस मैम। मैम जो फर्स्ट आंसर था मैम उसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं लाइक जब हम एक्सेस ऑक्सीजन लेते हैं तो द स्पीड ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इंक्रीजेस एंड द रिजल्ट इज दैट वी द मोर एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्कआउट। यस बेटा, यू कैन आल्सो इंक्लूड दिस। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन रिपीट करने को बोलिएगा, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज? ओके, सो स्नीजिंग में क्या होता है, सिंस you are inhaling the dust particles also. Okay, the dust particles, the pollen particles that are present in the air, you are inhaling them also. But in your nose you are having hairs and mucous membrane is there, that is going to prevent the air, or that is going to prevent the air that is having the dust, okay, with it. तो वो क्या करते हैं, हेयर्स और जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। बट समटाइम्स दिस हैपन कि वो ट्रैप नहीं होते हैं, वो इतने स्मॉल होते हैं दैट दे पास थ्रू द हेयर्स एंड द म्यूकस कैविटी। ओके, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन से भी पास कर जाते हैं एंड व्हेन दे गो इनटू द नेसल कैविटी तो वो वहां पे इरिटेट करते हैं आपकी नेसल कैविटी को। ओके, सो व्हेन दे मूव पास्ट द हेयर एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन there in the nasal cavity they cause irritation in the nasal passage. तो उसके कारण क्या होता है, you sneeze, आप sneeze करते हो जिसके कारण वो जो foreign particles थे, dust particles, pollen particles, वो बाहर आ जाते हैं बेटा। Okay, so this is the mechanism of sneezing so that the pure air and the clean air it should enter your body. ठीक है, सबके doubts clear हो गए हैं? Now you can lower your hand. Adgun, you can lower your hand. Gaurish, you can lower your hand. Chaliye, now we are going to start with the next chapter, that is the time and motion. So time and motion. तो इस चैप्टर में we will be studying about what basically motion is. आप पढ़ के आए हो मोशन की कुछ कैटेगरीज पढ़ के आए हो, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, सारे ये मोशंस पढ़ के आए हो ना आप? You have studied this in the 6th standard. ठीक है, तो हम उन्हीं मोशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे आपके कौन कौन से आगे टर्म्स हैं, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, we will be studying about this. Okay, how the concept of time is introduced. पहले हम टाइम कैसे देखते थे, अब हम टाइम जो है वो कैसे देखते हैं। ओके, तो this concept we will be studying now, right? So we will be starting with the time past firstly. So time you all know, right? How, which instruments you basically use for seeing the time? क्या आप घर में यूज करते हो टाइम देखने के लिए? कैसे पता चलता है आपको अभी 1 o'clock हो गए हैं, 2 o'clock हो गए हैं? What you see for that? You see clock, right? You are having some of the watches also. You are having clock, you are having watches also. ठीक है, watches digital भी हैं आपके पास, manual भी हैं. Okay? So clock, watches, they are there that we can, through which we can see the time. Okay? But have you ever wondered that how the ancient people, जो हमारे ancestors थे, जो ancient people थे,
वो कैसे टाइम देखते थे जब वॉचेस नहीं थी, जब क्लॉक्स नहीं थे। हमारे पास तो क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, डिजिटली भी आता है हमारे पास, ठीक है, वी आर हैविंग डिजिटल वॉचेस आल्सो। तो आपने हैव यू एवर वंडर्ड कि वो कैसे टाइम देखते होते थे, हाउ दे केम टू नो कि अभी इतना टाइम हो गया, अभी इतना टाइम हो गया है। यस, सो दे बेसिकली टेक इनटू अकाउंट सम ऑफ द नेचुरल इवेंट्स। वो कुछ नेचुरल इवेंट्स को क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे। जैसे सनराइज सनसेट हो गया, ओके, सनराइज सनसेट हो गया। अर्थ की रोटेशन से वो बेसिकली क्या करते थे, टाइम का एस्टिमेट लगाते थे, राइट। न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक का वो टाइम का एस्टिमेट लगाते होते थे कि अभी न्यू मून है, फिर जब नेक्स्ट न्यू मून आएगा, ओके, देन दैट मार्क्स द 1 ईयर, ओके, 1 मंथ, सॉरी। तो ऐसे ही सनराइज एंड सनसेट वो उन्हें डे के बारे में बताता था, ठीक है। नाउ इट इज अ टाइम ऑफ अ कंप्लीट डे, ठीक है, अब डे शुरू हो गया है, नेक्स्ट डे शुरू हो गया, अब नेक्स्ट डे खत्म हो गया है, ओके। सो 1 सनराइज टू द 1 सनसेट, ओके, 1 न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून। What this tell them? This tell them a month, okay? तो इससे वो एक मंथ का एस्टिमेट लगाते होते थे। Similarly, the time taken to complete the rotation of the earth around sun, this was estimated as a year, okay. So this was estimated as a year. तो एक complete revolution के लिए उन्होंने क्या estimate लगाया हुआ था, about a complete year, okay. And if you have seen some of the ancestral devices of measuring the clock time, ठीक है, आप देखते हो एक सैंड क्लॉक होती है, आपने देखा हुआ है कभी सैंड क्लॉक, जिसमें धीरे धीरे सैंड जो है वो ड्रिप करती है, ड्रिप बाय ड्रिप नीचे जाती है, फिर उसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है। सो जो एंशियंट पीपल्स थे वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे टाइम के लिए, दे यूज सनडायल, सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक, ओके। सो सनडायल, सैंड क्लॉक्स आपने देखी हुई हैं, इन द सेम वे देयर वर वाटर क्लॉक, राइट। तो ये कुछ ऑफ द डिवाइसेस थी जो पुराने टाइम में यूज की जाती थी, बट नाउ वी ऑल यूज क्लॉक्स एंड वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस, ठीक है, डिजिटल वॉचेस भी हैं हमारे पास। अब इनमें क्या फिनोमिना ऑपरेट होता है बेटा, ये वॉचेस जो हैं वो कैसे काम करती हैं, कौन सा मोशन कंसिडर करती हैं ये, ओके, जस्ट टेल मी द नेम व्हिच मोशन दे कंसिडर। Have you heard about the periodic motion, the motion that repeats itself, ठीक है, घड़ी में एक बार ही 2 बजते हैं, फिर उसके बाद 2 बजते हैं ना अगेन, राइट। तो दैट मीन्स ये कौन सा मोशन है, दैट इज द पीरियोडिक मोशन, जो अपने आप को क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है, ओके। So about this motion we will be studying tomorrow.